guys, my name is Smriti and you are on my channel Learn with Smriti. If you are a beginner and if you really want to learn English, then I have few tips that can help you to learn English, to be fluent in English. So I have already uploaded one video on the tip that can help you to learn English, to be fluent in English. Now in this video, I'm going to tell you some more tips which can help you to be a fluent English speaker. Well, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं. आप मेरे चैनल पे ऐसी टिप्स को फॉलो कर सकते हैं जो आपको इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश समझने में और इंग्लिश को डेली लाइफ में यूज करने में काफ़ी हेल्प कर सकता है. मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की है जहां पर मैंने आपको ऑलरेडी एक टिप समझाई है. आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ और टिप्स को डिस्कस करने वाले हैं. बट ये वीडियोस सुनने के बाद इफ यू आर नॉट गोइंग टू फॉलो इट, दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू. अगर आप इन वीडियो को देखने के बाद इन चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, आई एम प्रीटी श्योर आफ्टर 1 month you can see the change in you. Well, second tip is, why I'm saying it's second, because I have already given one tip to learn English. Second thing is, you don't need perfect grammar at all. If you are a beginner, अगर आपने अभी इंग्लिश बोलना शुरू किया है, so don't just think about the grammar. Don't think what people are going to say. Don't think how people are going to judge you. Just forget that. आपको सिर्फ बोलना है. You just have to speak, and for speaking, not only this language, any language does not require perfect grammar. So first thing is, forget about grammar, just speak. That is the only key. बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे क्लासेस हैं जहाँ पर आपको बोला जाता है 90 डेज में, 1 month में, 60 डेज में हम आपको इंग्लिश सिखाएंगे. बट इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स ऑल अबाउट स्पीकिंग. जितना आप इस लैंग्वेज को और किसी भी लैंग्वेज को आप जितना बोलेंगे, यू विल गेट परफेक्शन. So second thing is that you have to speak without thinking about the grammar part. Okay? Grammar part जब आप इस language को बोलेंगे, gradually, automatically आप सीख जाएंगे. Now, what is the second tip? If you are a beginner, अगर आपने शुरू किया है सीखना, तो you start with listening. What kind of listening is required? Now, you start listening English programs. For example, just see what gives you interest. You can watch any movie, or you can watch English news channel, anything in English, be it short stories. Okay, so start listening. Now, what is the point that needs to be kept in your mind while listening? If you're a beginner, don't just get into 2 hours of movie or 1 hours of any program. Just give 10 minutes. Or yes, 10 minutes I think more than sufficient for the beginner. 10 मिनट डेली के आप कुछ भी ऐसा सुनिए जो इंग्लिश में हो. और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन यूज सबटाइटल्स. आजकल सबटाइटल्स का ऑप्शन है हमारे टीवी में, हमारे फोन में, तो आप सबटाइटल ऑन करके भी सुन सकते हैं. So these 2 tips are really helpful if you follow this. Of course, अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो नथिंग कैन हेल्प यू. बट अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो यू योरसेल्फ विल सी द चेंज. If you like this video, do like my channel, subscribe and share, and do tell me your response in the comment section. See you in next video. Bye bye.